So ये जो emotions है which really determine the quality of our life. The quality of our life is based on how we are feeling. Thoughts तो आते हैं जाते हैं, there may be some good ideas, but how things, what happens in life and what we feel is what determines the quality of our experience of our life. And जो परिस्थिति है, the circumstances and what happens outside in the story of our life decides how we feel. तो बाहर का जो हो रहा है, जो भी हो रहा है, somehow seems to be in charge, in control of how we feel. So important it is that we, आपका most important खजाना जो है, your most important is how you feel. And that pleasure, the keys to that, most important, valuable of yours. The keys to that we have handed out to the outside world. So it seems a little bit कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है कि ये चाबियां हमारे हाथ में होनी चाहिए. I need to be the master of my feelings. I may not be the master of my circumstances, because circumstances, other people, what happens in the universe, what happens, we don't necessarily have much to say about that. We can control it to a very limited extent. बहुत कम कंट्रोल है हमारे हाथ में. अगर वो भी है तो एक्चुअली वो भी नहीं है. सब कुछ जो हो रहा है वही हो रहा है. It's all just happening. So this little body mind, उसके हाथ में परिस्थितियां नहीं है, लेकिन मनोस्थिति जो है वो हमारे हाथ में है, और उसको कैसे हम ले सकते हैं. एंड one of the best examples I would say of people who have mastered this is, how would you know कि मास्टरी है आप में किसी भी इमोशंस पर? ये पता तब चलेगा जब आप खुद उसके मालिक है. आप खुद क्रिएट कर सकते हो इमोशन. When you are able to create your emotion, regardless of the circumstances, regardless of this outer world, not simply changing emotions from one to the other, but literally creating emotion, then that is really mastery. And an example of that kind of mastery you can see on the stage and in films, right? The famous dialogue, is it from Diwar, wo अमिताभ बच्चन जब मंदिर में जाके वो भगवान से लड़ता है, is that Diwar or which movie is that? Diwar, right? Yeah, Diwar में when Amitabh Bachchan goes into the temple, he's like completely desperate, and he has this monologue inside the temple. He's full of anger and completely completely filled, livid. He's like desperate, he's angry, he is beyond angry. And what do you think his state of mind was when that scene was shot and the director said cut? As soon as the director said cut, what do you think was Amitabh Bachchan's emotional internal state in 1 second? Let's say after that final shot, in which the director was happy with that shot, he is also happy with the shot. So in an instant, that shift happens from
total anger and complete, almost out of control kind of anger. uh, from that it shifts to elation. Wow, kya shot liya, what a what a great shot we got. And he's probably giving high fives to the camera and the director and all that. So this is the clue ki ye completely created an emotion, created anger, created. And this happens with joy also, creating joy, creating happiness, creating laughter, um, creating sorrow, creating grief. हर एक जो नव के नव रस है in, and all the combinations of the nav rasas, you can imagine, you can mix these 9 uh, elements and in small and big proportions and create literally hundreds and thousands of nuances of feelings. And and they are able to create each one of those, any one of those, on demand. On demand, director says आप घर आए हो, बहुत खुशी का माहौल है, आप एग्जाम पास हो गए, and blah 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 whatever, and suddenly that actor is in a state of ecstasy and walks into the house and is hugging everybody and whatever. So this is the kind of mastery that is possible. And how is our life any different than a story? How is our life different than any other story that happens in any movie? um, so the ability to create emotion, you're able to. So an example of this in our own life is these so-called sad songs. I mean, sad songs, people who are into all this positive thinking and all that, yes, sad songs nahi sunna hai, sad songs sad banate hain. But only if you are a victim of that sadness. If you are entering that sadness, that state of sadness, as the creator of that sadness, you are the master of it. As a master, if you enter even grief and experience that grief, experience that sorrow, experience that longing that some lot of these songs um, speak of, then you're able to experience it. And because it is as source, as you choose to enter into that space, then that same emotion of sadness or sorrow actually has a layer of joy underneath it. And you really, um, you know yes, you experience an emotion um, called sorrow or longing, but underneath there's a लहर है आनंद की, जो उसके साथ साथ मिली हुई है. And that's, and because we are missing out something if we only go for one kind of emotion called I don't know what, like ha 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 ha, happy happy happy. अरे यार, 9 रस है. 9 रस है और 9 रस के कॉम्बिनेशन है. एक ही रस पी के बोर नहीं हो जाएंगे. सो 9 रस है, लेकिन 9 रस, वो 9 रस हम उस विक्टिम बनकर जब पीते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हाँ ये सर्कमस्टेंस आ गया है, नाउ आई एम लाइक दिस एंड आई हैव नो चॉइस बट टू feel fear or feel anger, then so experiencing those emotions as a victim of the emotions, then again we are missing the boat, because that is not what we are here for. Sandhya, are you okay? Why are you keeping on touching your camera? You don't need to unmute. You want to unmute? Okay. Okay now. Okay, thank you. So yeah, अगर हम फियर में जी रहे हैं या गुस्से में जी रहे हैं या वैसे कोई भी इमोशन जो हमें ले चला है, हम बह गए हैं उस इमोशन में, then we are missing out. Then we need to come out of that and return to our true self, which is
which is the background in which the story is happening, and again choose the emotion that we would love to have, which is the feeling of lightness, of peace, of joy. अगर बह गए हैं तो, लेकिन मास्टरी वहाँ है अल्टीमेटली कि जब चाहो किसी भी धारा में आप खुद जाके उसमें उन लहरों में घूम सकते हो. यू आर एबल टू enjoy whatever that particular quality of that emotion is, and then again return to as source, as the creator of that emotion, just like Amitabh Bachchan in Diwar, and not as the victim. And that is the ultimate mastery, and that is why I love, ghazals and songs which speak of longing, which speak of missing, which speak of struggle, because this is the human condition. ये एक रंग है जीवन का. हर एक रंग में खेलना आना है, हर एक रंग से ये चलचित्र लाइफ का बनाना है, हर एक रंग से. But as a master, not as a victim, not as the slave. So this particular ghazal, which kind of landed up somehow on my WhatsApp through Vidya, she just sent me a link to one beautiful ghazal by Shakil Badayuni. और मैं तो बस ये कल की या परसों की बात है, मैं तो बस इस गजल में डूब गया. सुबह सुबह ये मिल गई और मैं तो इसमें छलांग लगा दी, और बस ये क्या बात है, ये शब्दों में ये क्या क्या रस और क्या क्या अनुभव उत्पन्न हो रहे हैं. I was simply just flowing in this ghazal and just enjoying it. And some lines were such that I was literally in tears. और हो गया ऐसा कि I was listening to it, and my emotions were on my face, and Harsha happened to walked into the room, and she said, "अरे क्या हो गया, क्यों, why are you feeling like this?" And I said कि ये गजल सुन रहा था और ये बस ऐसे ही. And she said, अच्छा कौन याद आ रहा है, कौन सी वाली? पहले की कोई याद आ रही है क्या? And I said, nothing like that. It is not a particular person or anything. It's just the raw emotion of longing, feeling, and touching the subtle, beautiful emotions that we are all capable of. And how beautifully these lines have expressed those emotions. So I said, there is no story that I'm remembering. Without story, there is emotion. Then that's so not only, so one level is the story writes the script and the emotion is a result of the story. So you are completely at the effect of the story. Second stage is there is some story, but जो भी story हो रही है, you are able to decide how you are going to react to it, how you feel. That is the second stage. And the third stage is you are such a master of the emotion that you're able to create that emotion without even a story. There is no story, it's pure emotion. And it could be any emotion. It doesn't have to be tears or sorrowful. It can be laughter. Lopa was talking this evening about causeless joy, happiness for no reason. Guruji also has a thing about this. Happiness for no reason, causeless joy, storyless emotion. Then that is your indication कि आप mastery की ओर बढ़ रहे हो. So that's when you can enjoy a ghazal which has pain in it. When you can enjoy a movie which has sorrow in it, which has grief, which has tragedy. And it's that is what creates the why are things, events like bungee jumping or adventure sports and all of these so popular. Even horror films are popular.
I mean, हम डर से तो सब भागते हैं, लेकिन हॉरर मूवीज भी एक genre है. And there are people who enjoy horror movies. Personally, I don't. But there are people who enjoy horror movies because the feeling, because they are literally going there to experience fear. And because it's fear at cause, I'm purposely putting myself in a situation where I experience fear. So it's a, it's a fear happening at cause, rather than the other kind of fear where we go around life, अरे ये ऐसा होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, अरे वो होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, डर 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 लेके घूम रहे हैं. Then that is a complete victim state of fear. So how to be that, how to find that, becoming the master of the emotions. So one thing which meditation say, or so many experiences and all, कि हमें सच्चाई को देखना है पहले तो, क्योंकि ओ द स्काई इज फॉलिंग, द स्काई इज फॉलिंग, द स्काई इज फॉलिंग, ये जो थॉट है, ये थॉट को लेकर हम हिल जाते हैं. लेकिन उसकी ओर देखना है कि क्या है, व्हाट इज इट, इज द स्काई फॉलिंग? नो, द स्काई इज नॉट फॉलिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके सामने देखना है और उसे अनुभव करना है, अनुभव की तौर पर देखना है. ये इमोशन जो है, व्हाट इज इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? व्हाट इज इट दैट हैज us so much in under its influence and its grip? So for example, abhi, Vandana ji was talking about losing a mother recently. So feeling sorrow in that circumstance is appropriate. It's the right feeling, it's the right emotion. Usme phir, to say ki, oh no, you shouldn't feel sad. No, this is the right response. You're missing somebody who has brought you into this world, somebody who is part of your life is no longer there. And so feeling sorrow, feeling grief is an appropriate response. We are human beings, we are not machines कि बस चैनल बदलते जाओ और सिर्फ जॉय में रहो. No, it's okay to feel sorrow, it's okay to shed few tears. It's only when it no longer serves you, then that emotion has taken over you, and then it is time to take another look. Is it time to let it go? Is it time to release this emotion? Is it time to say thank you for whatever I felt at that time, but now it is time for me to move on to other things in life. So that is mastery. Mastery is not कि हमेशा हमेशा हंसते रहो. ये क्या बात है यार? जब रोने की बात है तो रो लो, हंसने की बात है तो हंस लो, गुस्से वाली बात है तो गुस्सा कर लो, डरने की बात है तो डर लो, बट उसमें खो मत जाओ, उसमें बह मत जाओ. So as Amitabh Bachchan, as an actor, or so many great actors, and even I have acted, so I know what I'm talking about. Creating that emotion, creating whatever emotion is appropriate in that moment. And through that acting training, I know I can, you know, one role where I played the father of a girl who is dying of cancer. Tears come to my eyes if I just say her name. Even right now. In that drama, her name was Hisa. A Japanese drama है. तो उसमें एक डायलॉग है, थोड़ा सा उसके में से सुना देता हूं मैं. जब तुम छोटी थी हिसा, मैंने तुम्हारे लिए एक लाल रंग का किमोनो बनाया था, कमरबंद काला और चांदी.
जब पहली बार पहना था तुम्हें, पहनाया था, तब तुम जैसे खिल उठी थी, एक चंपा के फूल की तरह। लेकिन अब वो मुस्कान नहीं रही, सिर्फ दाग ही दाग है तुम्हारे हाथों पर, तुम्हारी गर्दन पर। And it goes on. And that was the dialogue. And right there, sorrow, tears, in a moment, it can happen, it can come. So this is the level at which emotions can be mastered without a story, or creating a story and creating the corresponding emotion which is appropriate. तो यही है गजलों का भी। गजल भी जैसे अभी उसमें अगर डूब जाओ और यार शराब की बोतल में घुस गए तो यू हैव लॉस्ट द गेम। शराब की बोतल पीकर तुम गजल सुनोगे, क्या खाक तुम्हें समझ में आएगा? समझ में कुछ नहीं आएगा, बस ऐसे ही रोलोगे। बट कोई मास्टरी नहीं है, वो तो विक्टिम है, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं, दिस इज नॉनसेंस। बट देन फीलिंग द इमोशन दैट दिस पोएट, दिस जो जो आर्टिस्ट ने ये शब्दों को जो जो बेहतरीन तरह से जो व्यक्त किया है, उसमें उसका रस पीना वो एक अलग बात है। तो हियर इज दैट गजल विच आई हैड posted. So ni sa re dha dha ni pa ma pa dha dha ni pa sa. Yes, Nancy, sure. मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जाँ बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मेरे हम नफस यानी नफस यानी योर माई क्लैन, मेरे क्लैन से ही हो, मेरे ही हो, अपने हो, मेरे हम नवा, मेरे दोस्त बन के दगा न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जाँ बलब, लब यानी होठ, जाँ बलब यानी प्राण होठों तक आ गए हैं, वैसा जाँ बलब। मैं हूं दर्द इश्क से जाँ बलब। तो इश्क का जो पेन है, लव एंड मिसिंग, longing, all of this is all very very closely related, and all dimensions of love are available to be experienced. So that aspect of love in which you are missing somebody, वो दर्द इश्क से जाँ बलब, आई एम ऑलरेडी सो अप टू हियर, मेरी जान यहाँ तक आ गई है, मुझे जिंदगी की दुआ ना दे। लेकिन सो दिस इज अ यू नो
it sounds as if the poet is saying I'm fed up of life, but it's not what that is. Zindagi ki dua na de, matlab I am this close. It's the expressing the extent of that grief, the extent of that longing. Utna besabar hu main कि almost I feel like as if I want to give up my life. But then he takes it back in the very first शेर जिसका जो है. So I'm not going to sing the whole thing because it'll take long time. And anyway, the song I've posted on all the forums. मेरे दागे दिल से है रोशनी, मेरे दागे दिल से है रोशनी, इसी रोशनी से है जिंदगी. So दिल से है रोशनी. Dil is the heart of the seat of emotions. That the light of the story comes from the heart. And ये story है तो ये जिंदगी है. So this is a very profound line. मेरे दागे दिल से है रोशनी. What is manifestation? This whole, ये जो सारी कहानी, this story called life itself, ये movie जो है, जो life है, ये जो कहानी है, वही मेरे ही दिल से ही निकली है. तो उसी रोशनी से है जिंदगी. आई एम द सोर्स. दिस इज सेइंग आई एम द सोर्स. बेसिकली ये स्पिरिचुअल बातें हम पढ़ लेते हैं वेदों में कि अहम ब्रह्मास्मि, तभी लगता है वो बहुत स्पिरिचुअल है. बट दिस लाइन इज अहम ब्रह्मास्मि इन अनदर फॉर्म. मेरे दागे दिल से है रोशनी, इसी रोशनी से है जिंदगी. In other words, I am the creator of my life. That is what this line is saying. And of course, he loves this manifestation in that state. So मुझे जिंदगी की दुआ ना दे is just an expression. It is not like I don't value life or I don't love life. In fact, the next line after that, मुझे डर है मेरे चारागर. चारागर यानी जो क्योर करता है ना, यानी जो डॉक्टर है. मुझे डर है ए मेरे चारागर means the higher self. ये चिराग तू ही बुझा ना दे, because the pain is so intense, this pain is so strong. So I am afraid that this life, the flame of life, even though you are the one who is my healer, I'm afraid that you may become the source of the end of this life. So और दो शेर है. So चारागर पे ही है वापस. मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चारागर, ये तेरी नवाजिश ए मुक्तसर. नवाजिश यानी कृपा, मुक्तसर यानी manuals or your books or your theories or your book knowledge. ये तेरी नवाजिश ए मुक्तसर यानी by the grace or by the mercy of your book itself, मेरा दर्द और बढ़ा न दे. सो मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, जस्ट लीव मी अलोन. तेरा क्या भरोसा है एड हीलर. हो सकता है तेरे ये कृपा ऑफ योर मैनुअल्स यही मेरा दर्द बढ़ा न दे. सो कीप मी जस्ट. सो देन द नेक्स्ट वन इज मेरा अज़्म इतना बुलंद है. अज़्म यानी मेरी जो निष्ठा है, मेरा स्ट्रेंथ है, मेरा प्लेज है, माई कमिटमेंट इज सो स्ट्रांग. मेरा अज़्म इतना बुलंद यानी स्ट्रांग है कि पराए शोलों का डर नहीं. कि द फ्लेम्स ऑफ द वर्ल्ड, परिस्थितियां जो भी आएगी, आई कैन मैनेज इट, आई कैन हैंडल इट. मुझे खौफ आतिश गुल से है. खौफ यानी डर, आतिश यानी फायर or spark. The flowers which are so called the beautiful things that are around me, मुझे खौफ आतिश गुल से है, ये कहीं चमन को जला न दे. So I have no fear of all the circumstances and all the challenges that life may throw at me. But the things of beauty that I treasure, that are near me, only those, because those are the ones that can hurt me. They say sometimes, the world cannot hurt me. But if my own daughter does something, or my own son does something, or my own husband does something, my own wife does something, then it is hard for me to bear.
बट यहाँ पे भी हमें यही याद रखना है दैट दिस स्टोरी टेलर इज यू एंड यू आर द ओनली वन हु यू नीड टू लुक एट. There is no other. Everyone else is simply a character in the story, and you decide. You are the director, you are the script writer, you are the actor. You decide how you are going to react to whatever somebody does, because that somebody does according to their story, their script. They are also the director and actor of their life. आपको क्या लेना देना उससे? आपको आपसे मतलब है, अपने आप से मतलब है. सो ये आतिश गुल भी चमन को जला न दे. So that fear also you can release if you realize that you are in charge, you are in control. Somebody says something mean to you, especially somebody close to you. The stranger on the street may say anything about you. You may be able to just say, "हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है?" But somebody you love, when they may say something that you call as hurtful, that's when you need to put on your inner light and look inside and see what is it. And these emotions ultimately जो हम अगर light on करके अगर अनुभव के तौर पर देखेंगे कि क्या है, then the emotion is nothing but a combination of a thought and a feeling and a sensation in the body. Emotion is nothing but a thought plus sensation. That's all it is. अनुभव के तौर पर एज अ कॉन्सेप्ट हम कह दें कि डर लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, ये है वो है, उसको नाम दे दिया, लेबल दे दिया. लेकिन रॉ डेटा अगर देखते हैं हम, what is present is only a thought, and there is a sensation in the body. Some feeling of heat over here, some feeling of heat in the neck, or some, some churning in the stomach region, some sensation which you now label as anger or as fear, but it's a label. रॉ डेटा में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि ये कुछ बुरा है या पावरफुल है. उसको हवा, चारा, पानी आप देते हो. उस सेंसेशन को, गर्मी लग गई गर्दन पे, मान लो किसी ने कुछ इंसल्टिंग कह दिया आपको. What happens? There's a thought. Wow, he said something mean to me. It means something about me. A thought accompanied by a sensation, whatever it is. Heaviness on the shoulder, heat on the neck, some feeling in the pit of the stomach. ये कुछ भी हो, इसके पास कोई ताकत नहीं है अपनी. ये फीलिंग ऑफ हीट इन द नेक, वजन ऑन द शोल्डर, क्या वजन उतना है कि आप दब गए? नहीं है, कोई पावर नहीं है उसमें. और अ चर्निंग फीलिंग इन द स्टमक और वॉट एवर इट इज, इट्स जस्ट a sensation in the body. There's nothing else. आप उसको हवा देते हैं, आप उसको चारा देते हैं, आप उसको पानी देते हैं, तब जाके वो बढ़ते जाता है, उसको एनर्जी मिलते जाती है. और फिर उस एनर्जी को लेकर आप या तो डर जाते हैं, या गुस्से हो जाते हैं, या रो पड़ते हैं. तो ये सेंसेशन को लेकर एक्शन तक आपने उसको पुश दिया है, आपने उसको चारा दिया है, आपने उसको ये दिया है. तो ये ना देना किसके हाथ में है? चाबी किसके हाथ में है? आपके हाथ में है. तो वो सिर्फ आप देख ले कि अगर ये कि दिस इज ओनली अ सेंसेशन इन द बॉडी, इफ यू हैव द अवेयरनेस इन दैट मोमेंट दैट दिस इज ओनली अ सेंसेशन इन द बॉडी, देन यू आर फ्री टू रिएक्ट हाउ एवर यू रिएक्ट. चाहे तो अमिताभ बच्चन का डायलॉग ही बोल दो, गुस्सा वाला बोलना है तो बोल दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत बोलो, बट वो आप, यू आर इन चार्ज नाउ, you are in control, not the emotion is in control and you are the victim acting like a puppet. वो जैसे हिलाया, गुस्सा हो गए, डर गए, रो पड़े, जो भी है. You understand the difference? It is not that the words are not allowed. There is nothing that is not allowed. Everything is part of this beautiful universe. The only thing is, are you in charge or are you the slave? Are you the master or are you the slave? वो आखिरी शेर है इसका, वो
उठे है लेके होमो सुबु. Now this is now a change to the dialogue with the divine. अभी तक ऐसा लग रहा था कि that the author is talking about a lover that he's missing. But the last शेर जो है reveals that it is a dialogue between the Shire and the divine. That this Dard-e-Ishq that he is talking about is the longing for God, is the longing for divine, which is up to here now. So वो उठे है लेके हुम ओ सुबह. हुम यानी वजन, सुबह यानी सुबह. तो वो उठे है लेके हुम ओ सुबह. मतलब the divine is presenting the world to you. The dawn of life is being presented to you. अरे ओ शकील कहाँ है तू. This is the शायरी. वो उठे है लेके हुमो सुबह. अरे ओ शकील कहाँ है तू. Shakil is this limited form, this body. This divine is presenting to you this morning, this dawn, this enlightenment, this freedom of being a master of your life, the master of your emotions. That dawn is being presented to you in this form. And today I am bringing that to you. हुमो सुबह लेके आए हैं हम. अरे ओ शकील कहाँ है तू. राजेश कहाँ है तू. हाँ, मनोज कहाँ है तू. वंदना जी कहाँ है तू. तो वो उठे हैं लेके हुमो सुबह, bringing you the dawn of awakening, the dawn of enlightenment, the dawn of joy, the dawn of love. एंड शकील बदायूनी की लिखी है. तो ये मतलब जो उनका जो पेन नेम है, कभी कभी पेन नेम यूज करते हैं, यहाँ तो शकील ने खुद का ही नाम यूज किया है. तो वो उठे हैं लेके हुमो सुबह. अरे ओ शकील कहाँ है तू. तेरा जाम लेने को बज्म में. बज्म इज द क्राउड. बज्म यानी द पब्लिक. तेरा जाम लेने. तो वो the dawn of enlightenment is being presented to you. Again, now it's being compared to a glass of wine. This is being offered to you. That now onwards, live like this. Live as the master of your emotions. वो जाम दिया जा रहा है आपको, लेकिन तेरा जाम लेने को बज्म में कोई और हाथ बढ़ा न दे. So it has been offered to you. It has been brought to you. So, अरे ओ शकील कहाँ है तू. Wake up and take this offering. Take this offering and drink of it. कहीं ऐसा ना हो कि तुम खो गए अपने आप में और किसी और ने ये जाम ले रखा है, ले लिया, और आप रह गए प्यासे के प्यासे. ये तो कहने की बात है, लेकिन हमारे पास एक जाम नहीं, बहुत जाम है. किसी और ने ले लिया तो और एक दे देंगे. So, but the point is, don't miss it. Because even if there is an infinite number of glasses of this nectar of knowledge, an infinite number of sources, whether it is a book or whether it is a person or it is some event, whatever the source of this knowledge, जब भी ये आता है आपके सामने, तो दोनों हाथों से उसे स्वीकार लो, दोनों हाथों से उसे उठा लो और अपने लबों पर लगा के इसे पी लो, पूरा पूरा पी लो. So that is the message of this last line. So beautiful. Now, if you are sitting there thinking, अरे ये दर्द इश्क और ये ऐसा वैसा है, उसमें क्या जाना, ये पॉजिटिव रहो, हमेशा हमेशा हंसते रहो. यार, ये is all, you'll be missing something. You're missing something in life if you're not able to enjoy the laughter and the tears. So mastery of emotion is not about choosing only one emotion or one type of emotion over other emotions. Mastery of emotions is about being able to swim, to drink, to play, enjoy, love, and be in all emotions.
any and all emotions that you wish to create, that present themselves to you. Anyway, you're creating everything that's happening. Anyway, you're creating, whether you're creating it consciously or you're creating it unconsciously, आप ही create कर रहे हो, क्योंकि आप ही शिव हो आपके life के. So you are creating it. Now, if you're creating it, you might as well enjoy it. So it's not about having only one kind of emotion. It's not about that. It's about being a master of every kind of emotion. And the funny part is that when you are master of every kind of emotion, the underlying जो एक लहर है जीवन की, वो लहर आनंद की ही है. वो आनंद की ही है, शांति की ही है, और bliss की ही है. So, but it's only when we miss this, then we miss experiencing that leher, which is the underlying एक background है life का, वो भी हम miss कर जाते हैं. So wonderful. Any thoughts or questions or comments? यार मैंने ये फॉर्मेट बदल दिया था और आज मैं फिर भूल गया. मुझे तो डायलॉग करना था हर एक से. बातें करनी थी. और नैन्सी एक्चुअली had a very pressing and urgent question. Nancy I think she's left, but we'll go into her question next time for sure. हाँ दीपक बोलो. So background creates the foreground. Background creates the foreground. Background is really, it's really about making the background more and more present in the foreground. फिर foreground चाहे जो भी हो, it makes very little difference. In fact, at the end of the day, it makes no difference. It makes no difference. जो भी चल रहा हो कहानी है यार, कहानी है, क्या फर्क पड़ता है? Enjoy the story. चंद्रमा का वो अमावस से पूर्णिमा और पूर्णिमा से अमावस. Exactly. वो तो बाहर चलना ही है. चलना ही है तो अंदर भी चलेगा. हाँ, लेकिन याद रखना है कि अमावस में तारे ज्यादा दिखते हैं ना. करेक्ट. तो उसका भी आनंद ले लो ना. अमावस का भी आनंद ले लो. अमावस का भी आनंद ले लो. और जब ये पूनम का चांद है, तब उसका आनंद ले लो. So the cycles of life are under your परिस्थिति से नहीं, मनोस्थिति से जीवन का अनुभव डिसाइड होता है. राइट. अभी एक बहुत बढ़िया गुजराती मूवी आई थी. अच्छा. आप एक दिन उस पे भी बात करिएगा. क्या नाम था? चल मन जीतवा जाइए, पार्ट 2. I think I heard about it. I've not seen the movie, but sure सुन लेंगे, देख लेंगे. पार्ट 1 तो YouTube पे अवेलेबल है. अच्छा. और पार्ट 2 रिलीज हुई थी, लेकिन अभी भी थिएटर्स में, कुछ थिएटर्स में है. चल मन जीतवा जाइए. चल मन जीतवा जाइए. राइट. और ये जो सेकंड पार्ट है वो मनोबल के बारे में ही पूरी मूवी बात कर रही है. राइट. और ये मनोबल आपका ही है. इट्स नॉट समथिंग यू हैव टू लर्न, या खरीदना है कहीं से, या कहीं से लाना है या कुछ. इट्स ऑलरेडी योर्स. इट इज ऑलरेडी यू. इट्स ओनली अ मैटर ऑफ एक्टिवेटिंग इट. reignite. Beautiful. Great. संजीव जी. हाँ जी प्रकाश जी. प्रकाश बडेरा बात कर रहा हूँ सर जी. हाँ. मैं एक सजेशन दे सकता हूँ आपको. बढ़िया, बोलिए. हाँ, if possible for you and all the participants, if we can change this program to Friday. अच्छा. So most of the participants from the TYL also can join, since the session on the Friday it ends at 9 o'clock. अच्छा. This is my just suggestion, sir. If it is acceptable to all, we can change. Yeah, I think should be possible. Let's anyone has any issues, we can take your own time. Yeah, we will post it on the group and just see if anyone has any particular. Because Friday it ends at 9 o'clock there. Okay, so 9 o'clock you can jump immediately here. Okay, fine. Chalo. It is my suggestion. If possible, please consider over this.
Yes. Wonderful. हाँ, पांडे जी आपने कुछ लिखा है, सुना दीजिए। ये आपको सुनते सुनते ही एक्चुअली आपकी गजल जो है ना, जो आपने गाया है, हाँ। वो ओरिजिनल गायिका तो खैर मैं सुनता रहा हूँ, लेकिन आपको सुन के वाह क्या सुकून आया है। और वो पहले तो एक थोड़ा सा हल्के फुल्के मूड में बता दूं कि मैं सुन रहा था, हाँ। जैसा आपके साथ हुआ ऐसा ही कुछ मेरे साथ। श्रीमती जी बोले क्या हुआ, तो मैंने कहा आप तो बेगम है। हाँ। मैंने कहा आप तो बेगम है, अब मैं तो बेगम हूं नहीं, तो इसी बहाने कुछ थोड़ा सा सोच लेता हूँ, उस गम का ख्याल करके रो लेता हूँ। अच्छा, आप बेगम, अच्छा क्या बात है, आप बेगम है। बेगम है, मेरे पास तो बेगम है। आप तो बेगम है, हमारे पास तो Yes. गम है। बहुत नहीं, अच्छा। गम भी नहीं है, तो बस ये गजल सुन के तो थोड़ा सा गजल ख्याल सुन कर के लेता हूँ उस गम का। गम, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो जी, मैंने अभी जो आपको सुनते सुनते लिखा था वो मैंने सुनाइए। शेयर भी किया, चूंकि आप बहुत अच्छा हो गए, तो मैं उसको बोल देता हूँ, बोलने से ज्यादा हाँ, आपको अच्छा लगेगा। सुनाइए इरशाद। तेरी यादों का कारवां उसे हवा देता है, वाह। तेरी यादों का कारवां उसे हवा क्या देता देता है, है। ये जुदाई का गम है या दवा देता है। अच्छा, ये जुदाई का जुदाई का गम है गम या है, दवा देता दवा है। देता है। उफ उफ, बहता है नैनों से मगर सुकून देता है। बहता वाह। है नैनों नैनों से से मगर मगर सुकून देता है। सुकून देता है। पता नहीं बिल्कुल, तेरी जुदाई का गम है या दवा देता है। या दवा दे। बड़ा बढ़िया, यही परफेक्ट मैसेज है। और ये अभी आपके बोलते बोलते बनी है। ब्यूटिफुली वर्डेड। या और यही मैसेज में ही ये, दैट वाज द एसेंस ऑफ व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, कि आंखों से पानी बह रहा है लेकिन सुकून भी मिल रहा है। सुकून भी मिल रहा है। That's the mastery over emotions. So we समुद्र don't में have to be stuck on any particular one emotion or one type of. सारे फ्लेवर्स है, सारे फ्लेवर्स का मजा लेते जाओ और बहते जाओ, आनंद में मस्ती में रहते जाओ। और Bless you, समुद्र में bless भी you. आपके बोल लहरें यूट्यूब में उठती जल्द हैं से जल्द ज्वार अपलोड भाटा करें की साहब। तरह। बिल्कुल, हाँ आप, दीपक। मैंने कहा मैं आपके बोल थोड़ा यूट्यूब में अपलोड कर दीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोग सुन सकें हाँ उसे। जरूर, आज ये जो सेशन हाँ, नहीं, और वो जो सॉन्ग जो है गजल, वो जो सॉन्ग है, सॉन्ग। हाँ वो भी अपलोड कर लेते हैं, या दीपक। हाँ, मैं कह रहा था आपने लहर की बात करी हाँ और मैंने चंद्रमा की फिर से बात करी, और अभी याद आया कि भाई समुद्र में लहरें उठती है हाँ। और ज्वार भी आता है, भाटा भी आता है। राइट। और अब जब हम समुद्र जाते हैं तो दोनों प्रकार का वातावरण को एंजॉय करते हैं। बिल्कुल जब लहरें तेजी से आके गले लगा रही है वो राइट। भी, और जब लहरें धीरे धीरे सरकते हुए पीछे जा रही है, बिल्कुल। तो हमें ये ध्यान रहता है कि आज जो समुद्र पीछे जा रहा है ये अगले 24 घंटे में या कुछ समय बाद में वापस गले लगाने भी आ जाएगा। राइट नहीं, उसी को लेकर नहीं, सिर्फ वो पीछे जाने वाली जो क्रिया है उसमें भी आनंद। हाँ, ये नहीं उसमें भी कि आनंद। उसमें भी आनंद, ये नहीं कि आएगी वापस तभी आनंद करेंगे, वैसा नहीं है। राइट। उसके इंतजार में नहीं रहना है कि वो आएगी तब हम आनंद में हाँ। रहेंगे, ये जा रही है तो जाने दो। लेकिन हम हम्म। तो उसका ऐसे नहीं, ये जा हम्म। रही है उसका भी एक मजा है, उसका भी उसका मजा भी है। उसका वो भी लेना है। यस राइट। यस। राइट, ओके, ब्यूटीफुल, ओके। थैंक यू, लव यू ऑल। सी यू नेक्स्ट टाइम, मे बी फ्राइडे करेंगे नेक्स्ट टाइम से, देखते हैं। ओके, ग्रेट, बाय, थैंक यू ऑल, टेक केयर। थैंक वंदना यू, जी, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। या you are, anything you want to share, Vandana ji, based on what you heard or what? Yeah. Yeah, Sanjivji, very nice. I do get a lot of insights after each and every Zoom session I attend, and today's was very peaceful for me. Great. Thank you. Wonderful. Thank you. Hari Om Tat Sat.